Hello everyone. So here we are with a post-contest discussion of starters 150. So we'll be discussing four questions today and div 2. So uh, let's start with the first one. Let me share my screen. Is my screen visible? Just let me know. Yes. So this is the first question. So the first question says that you are given an array of length A along with an integer k. It is known that A is sorted in non-descending order, basically non-decreasing. That is AI is less than equals to AI plus 1 for every I. Okay. So you have to find the minimum of A and the maximum of A. Let's say that is X and Y respectively. And you have to delete X and Y from the array and you have to append X plus Y at the back. Okay. So note that after this the length will be decreased by 1 of course. And finally you have to tell the final array after k such operations. Okay. So this is like quite simple. So let's consider this is my array. And let's say that, just a second. Okay. So let's say that if I sort this array, okay, if I sort my array, so I'll be having like minimum element at the first index and the maximum element at the last index. So is there any like glitch in my or lag in my voice or screen, or is it synchronized? Is there any network issue, guys? No, sir. Everything is clear. Just give me a second. I'll reconnect. Am I audible to you? Yes, sir. Am I audible? Okay. So let's start again. So I was saying that let's consider that we are given this array and if I sort the elements, so I need to find that this is my minimum element, this is my maximum element. Let's say this is X and let's say this is Y. I have to delete X and Y. I delete X, I delete Y. And what I will append in my array is I'll be appending X plus Y. So of course, if Y is the maximum element, then X plus Y would obviously be taking its position at last in a sorted array, right? Because Y is the maximum element, and X plus Y, if I append it at the back of the array, so obviously it would not like disrupt the order, the ascending order of the array, right? So what I want to say is like if you keep doing it like for 3 times, so what will happen? Like uh, if you keep doing it for 3 times, so what will happen is like is as good as key in one operation you are deleting X and Y and you are appending X plus Y. So it is as good as like you delete just first element X from your array, and what you do is like you increase the like or change or replace the last value, that is Y, with X plus Y. Yes or no? What I'm trying to say is consider this is my array and X is the minimum element, Y is the maximum element of this array. So the operation asks me to like delete X and Y and append X plus Y, right? What I'm saying is instead of this is as good as you delete X. Okay. You delete X and you change Y to X plus Y. Aren't the both operations same? Yes. Yes. Yes, sir. Did you get this? Yes, sir. So Yes, sir. so the question now becomes quite simple. Like you have to do it for k times, and k is like on seeing the constraints. K is less than n, so you can like quite easily do it in O of n. So if I the approach is clear to you, right?
like we can discuss the solution. The solution is quite simple. Yeah. Yes, sir. So here we have taken the inputs like n and k, okay, and then this vector, the of course the array, and I have sorted this. Okay, I have sorted my array, and I have taken this index, or what you can say is for the rest of times, like see that I have to like see what I'm doing by this index is I'm just incrementing this index. This simply means that what does it mean? Simply means that suppose this was my array, my index was initialized to 0. So this is the on doing the first operation. What I will do, like I'm not like actually deleting my element. What I'm just doing is like if I do this operation one time, so I'll delete x. That is theoretically I'll delete x, right? And I will replace the last value by x plus y. Okay. So it is as good as since it decreases the size of the array by one. It is as good as like I continue with this index and I'll print the whole array again. So it will be printing, of course, n minus one elements if n was the initial size, right? So I'm not actually deleting the first element. I'm just keeping the track that till where my k operations are done, and I'll just simply print all the elements from my this index ind till my last index, right? So it will be giving me my desired array. Yes or no? Is this Yes, part sir. clear? Yes, sir. Okay. So I'm just basically keeping the track of my first deleted element by this index, right? So what we can do here is like write it like this. So for k times, what I will do for k times, like I will this is my last index. Okay, I will increment the value by the first. That is basically what I'm doing here. Like v of n minus one is currently my y. So what I'm doing is replacing y with x plus y and incrementing my this forward iterator. Okay. And last, what I can do is like I can print all the elements from index, like from kth index to n, right? And this index keeps my track of the first element. First minimum element of the new array. So is this the approach is clear? The solution is clear, or you have any doubts on it? Just let me know. Yeah. Is the approach clear to you, everyone? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. So let's move to the next question. The next question, equal pairs, the easy version of it. Okay. The question says that you are given an array consisting of non-negative integers. Non-negative means uh, all the positive integers and also zero. Okay. And we define f of a as follows: that you have to replace ai such that ai equals to zero. Replace ai with any arbitrary positive number, and you have to calculate the number of pairs I comma j such that I is less than j and ai equals to kj. Okay. F of A is then the maximum possible value of P, if this value is defined as P. If you choose the replacements of zero appropriately, okay. So you have to like find the maximum possible value of F of A, okay. So
So the question says that like you're given an array and it consists of some positive integers, okay? Positive and along with a zero also. So let's say let's consider a case where just a second. Uh, I was saying that let's say that let's consider this array and consider a case where no zero is present. Okay. So let's say we have this one and two, a t and a four. So this was my array. Okay. So mm, the question asks me to like calculate the maximum possible value of p. And what is defined as p? P is defined as the number of pairs I comma j such that I is less than j and ai equals to aj, right? So if I see like this one and this one, so this can be my I and this can be my j. So one possible pair could be like 1 comma 2. Okay. And since no other occurrence of 1 is there, so only one such value of p is possible, and that is only the maximum value, right? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So thing is like what you can do here is if like this was your array, this was the case, right? Like 1, 1, 2, and two zeros were present here. So like you can replace zeros by any arbitrary positive number, right? So either you can make it into 2 or you can make it into 1. Initially, if you consider if you consider the the value of p without like turning these zeros into any arbitrary positive number, so this would be like these would be pairing up and 2 won't be pairing up with any of the any of these elements because it's like it is as good as like if you have n occurrences of any element, so the number of pairs I comma j would be nc2, right? nc2 would be like the count of such pairs such that I is less than j and also ai is equals to aj. Is this thing clear? Yes, sir. Like how? Yes, sir. Yeah. So what greedily what comes to our mind is that we should convert that these all zeros into a number, or we should replace them with such a number that is having maximum frequency in the array. Why? Because it will be like let's say there were elements like 1, 2, 3, or 4 or anything. So let's say its frequency was f1 and its frequency was f2 and then f3. Okay. So initially they would be contributing to my answer such that my answer would be like f1 c2, okay, plus f2 c2, okay, and plus f3 c2. Yes. So far this would be my answer. If I like do not convert any of them, any of the zeros into any of these numbers, 1 or 2 or 3. Yes or no? My answer would be like probably looking like this, right? Yes, sir. So if I have a choice to convert all the zeros into any of these numbers, either 1 or 2 or 3. So since 1 C2 is defined as f1 into
f1 minus 1 by 2 if you like expand it. So what I'm trying to say is you can like let's say that if the count of zeros was x, so you can increase either f1 with f1 by x or f2 by x or f3 by x. So greedily to increase your value of answer, you would like try to increase that value which is maximum among f1, f2, and f3. Why? Because here we are like in expansion of f1 c2 or f2 c2. What we are doing here is like we are multiplying them f1 with f1 minus 1. So if we increase this factor by x, so it would be like if f1 if f1 was the maximum so far, so it would be like having more impact on the answer value as compared to any other frequency, right? So is the like is the intuition clear why we are like adding, or it is obviously it is like intuitive also. Like if we have to convert all the zeros into some element, obviously to maximize the frequency of any element, we would convert all the zeros into that element which is having maximum frequency in the array, right? Yes, sir. Is this thing clear? Yes, Okay. sir. So Yes, now sir. we are left with this thing that now we are left with this thing that suppose I create a frequency map that one is coming sometimes and let's say f1 times and two is coming f2 times, okay, and so on. So what my answer initially would be? My answer initially would be like as mentioned, like f1 c2 plus f2 c2 and so on. And at last, what I can do? Like let's say that f1 or the one was that element which was having the maximum frequency. So what I will do that I will subtract f1 c2 from my answer, and I will include what I will include. I will include f1 plus uh, the count of zeros in my array. Let's say it is x. Okay, f1 plus x c2 in my answer. Yes or no? So it will be like my final answer. Is this thing clear that how we came up with this formula? Yes, sir. Yes, sir. Yeah. Is it clear to everyone? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. So let's see its implementation. It was quite simple. Gosh, let's say that. Okay. Hmm. So like here uh, I have taken the inputs, of course, the length of the array and the array itself, and I have created a map. Okay. This map is like a map of integer comma integer. Okay. And and then I have generated my frequency map. I have generated my frequency map here, and then I have calculated the maximum frequency in this max variable. So let's say that I am iterating over the map here, and if I dot first is zero, then I'm simply continuing. Like I'm not taking the where I'm calculating fi c2. Okay, where I'm calculating fi c2, I'm not considering I to be zero, right? I'm not considering the frequencies of zero. Okay, because I'm like converting my zeros into a positive number later on. So I'll just take the count of zero later on. So and I'll take the maximum frequency of the rest elements. So in my max variable,
So it would be like a maximum of like the max and I dot second, which is the frequency of current value. And then I'll include like increment or increment by answer by this frequency, like I dot second T2 is basically as good as I dot second into I dot second minus 1 whole divided by 2. Okay. And at last, I will take the frequency of zeros, which is as good as map of 0. And like I will subtract the maximum frequency, the maximum frequency C2 from my answer and include the maximum frequency plus count of 0 C2 in my answer. Right? Is this part clear to you? Yes? Yes or no? Is the implementation clear? Yes, sir. Yes, sir. So let's move to the next question. Next question says this is the hard version of the same problem. So for this is the same thing. Like these 3 points are same in the like in the previous question. We are given an array. The only difference here is the array here is initialized with 0, right? And what you have to do, you have to like you will be given n events or n queries where you will be given two values in each query x and y, and you have to update the set index with element y. Okay. And then you have to find f of a. It is guaranteed that all the n events have distinct values of x. That means that each index will be exactly visited once. Okay. This means that. And yeah. And it says that we don't actually replace it by zeros. Okay. And then you have to simply calculate the for every query, like you have to calculate the f of a. Okay. Let's take any example for this. Let's take this one. Okay. So this first example says that the question says that you are initially given this array and it is initialized with zeros. It is like filled with zeros. And at each query, what you will do, like you will give an x and y, and you will like x is suppose 2. Okay. So at the second index, you will keep a value y, and y is obviously a positive integer. Let's say it is 2. So for this first this first query, my answer would be like the if I have to like maximize the value of f of a, I will obviously converting all of these zeros, all of these zeros my into my into that element which is currently maximum, right? Which is currently maximum, my mx, which is of course 2 here. Mm, like if I see all the frequencies of positive integers, that is except 0. So I'm currently having my map as 2 is occurring one time. So this is my map so on. So my max is of course 2. So I will be like converting all the zeros into my that element which is having the max frequency so on. And so that means that all these zeros would be converted into 2. And my final frequency of 2 would be 4 and my answer would be 4C2, which is as good as 6, right? And let's say that let's say that in any another query, so my now array becomes, so we are not actually replacing zeros, we are just seeing that in any query how we can maximize, right? So let's consider this value.
let's say this was my 0, 2, and 00. So let's say that next query like converts this 0 into a 1. Okay. So now frequency of 2 and frequency of 1 is equal. So it does not matter that either you convert the remaining zeros into 1 or the remaining zeros into 2, the final answer would be same. So what I'm trying to say is that we only care, what we actually care about is we care about that element which is currently having the maximum frequency so far, right? In each query after updating my value ax with y, what I actually care about is that element which is having the maximum frequency so far. Yes or no? Like, do you believe that if I anyhow find that element which is having the maximum frequency, like I can simply write my answer directly? Is this thing clear? Anyone having any doubt so far? Am I audible, guys? Yes, sir. Do you have any doubts so far in this? No, sir, it is या clear. फिर नहीं समझ में आया? दोबारा से समझाऊं? नहीं सर, ये अटेम्प्ट किया था, ये समझ में आ रहा है। इसके अगले वाले में दिक्कत थी सर। Okay. And what about others? Is this thing clear so far, which is explained? Okay. So moving ahead, what I want to say is that let's say that I keep the track. What I only care about is, let's say that my frequency map used to seem like this something. Okay. Like one was occurring some F1 times, and that is my frequency of all those elements were like F1, F2, F3, and so on. Okay. And uh, and at each query, what actually happens is all the elements were initialized to 0. So at each step, at each query, the count of zeros is decreasing by 1, and and any of like any of these values, like since all the values are less than equals to n, so let's say that I have a frequency array, okay, and there are n elements in it. So at each step, what will happen? The count of zeros will be decreasing by 1, and any of these frequencies, like from f1 to fn, any of these Excuse me, frequency sir. would be increasing by 1. Yes. Sir, sorry to intervene in middle, but Manya and other girls have quitted because they don't have Wi-Fi in their hostel. Their Wi-Fi is, we can say, connection lost. Okay. So, sir, currently recording is not working. So, we have to record, or what else we have to do now? No, it is being recorded. It is being recorded. Okay. So what I was trying to say is that let's say we have these frequency array, and at last, what happens is like in each step, what will be happening? Like if my count of 0 was something like stored in this variable count, so on each step, I will decreasing my count by 1, which is count of 0 by 1, and and the query would be resulting in would be result in incrementing in either of these values, either f1 or f2 or f3 or so on till fn. Exactly one value would be incrementing by 1, right? Let's say fi,
fi plus plus. Is this thing clear? Yes, क्योंकि sir. कोई एक एलिमेंट जीरो को रिप्लेस करके आएगा एंड दैट एलिमेंट वुड बी ऑफ कोर्स लेस देन इक्वल टू n. So either f1 or f2 and so all till fn, कोई एक एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी एक से बढ़ जाएगी, राइट? Yes, sir. तो Yes, sir. just again. So what we actually have to do is, like, let's say that currently मेरे पास जो भी query आई, let's say that I have x and y. X is my index and y is the value to be updated, right? So let's say that I have x and y, and what I will be doing, मतलब जो so far मेरा आंसर कैलकुलेटेड होगा, right? Let's say this is my answer so far. So now this answer includes all the summations of FIC2 for all those elements I which are present in my currently my array, right? All those elements which are having like frequency greater than zero in my array. Okay. So what will be happening that either of the frequencies would be like incrementing by one. Let's say that f1 gets incremented by one in my answer in the current array. That is the count of one gets increased by one. So that is I have to like replace f1 c2 with f1 plus 1 c2 in my whole answer. This is the only change that I need to perform in my current answer to get my final answer of current query, right? Is this thing clear? Yes, sir. So what I will need to do, like I will subtract f1 c2 from my current answer and I will add f1 plus 1 c2 to my final answer. So if I just like try to expand this, what I conclude is that f1 plus 1 c2 is as good as f1 plus 1 into f1 by 2. Like I am going to add this and I am going to subtract f1 c2, that is f1 into f1 minus 1 divided by 2. Since the denominator is common, so like we can take f1 common from both. Okay, like if I take f1 common from these, so I'll be left with taking f1 as common. I'll be left with f1 plus 1 minus f1 minus 1. f1 plus 1 minus f1 and minus 1 would obviously become plus 1. f1 and f1 gets cancelled and whole thing is divided by 2. Plus 1 becomes 2 and these also gets cancelled. So ultimately I'm left with f1 only, right? So it is as good as just adding the current frequency, that is f1, to my answer, to my current answer. So it would be like as good as changing the frequency in my frequency array. And what I have to do is at each step I'll only just need to like add the current frequency f1 in my final answer, and I have to like decrease the count of zeros. Now let's say ऐसा हो सकता है कि आफ्टर डूइंग दीज क्वेरीज, मतलब एट ईच क्वेरी ऐसा हो सकता है कि अभी तक जो भी मेरी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रही होगी दैट गेट्स चेंज्ड, व्हाई? क्योंकि आई एम इंक्रीमेंटिंग एनी फ्रीक्वेंसी बाय वन. तो ऐसा हो सकता है कि कोई फ्रीक्वेंसी एक से इंक्रीमेंट होके वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है? तो टू इंश्योर दैट थिंग ऑल्सो, जो हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे वो हम यहाँ पे करेंगे, दैट इज like my final answer or my current answer so far.
So I will I will subtract my maximum frequency so far. My maximum frequency so far C2, and I will increment this maximum frequency plus the count of zeros. Let's say that is count C2. Okay. So this is same as like we were doing in the last question. Why we are doing this? We are just doing this to ensure that this max was the maximum frequency, and since we convert all the zeros to the element which is equal to max, so its frequency increases by max plus the count of zeros. So we have to put it in my answer as well. It is as good as subtracting it with max C2 and incrementing it with max plus count C2, where count is the count of zeros, right? So is this thing clear? Yes. All we need to handle the queries is just like I have to just keep updating my map, the frequency map or the frequency array, whatever you can create. So that takes like O of 1, right? Because I'm just incrementing the current value y, the frequency of the current value. So it is like just going to take O of 1 operation for each query, and the probable solution would be in the time complexity O of n. So let's look at the implementation real quick. So in the like you can also implement it by like this solution is in O of n, but in contest like I like solved it using O of n log n. So what I did there was that here we are doing it in we are handling the queries in O of 1. So what I was actually doing that I had created a multiset. I had created a multiset, and what I was actually doing that I was pushing frequencies the frequencies in my multiset, right? So that I was doing to check my max element and that stuff. So not going into that thing, let me explain this. This is like quite simple. So this is I take my n as input, and since array is not given here, because all the elements are initialized with 0, so I will take the count of zeros in my count variable and I will initialize it with n, and my answer is 0. Why it is 0? Because all elements are 0, right? And my answer contributes to like summation fic2, where fi is the frequency of ith element where I is not 0, right? So I don't consider the elements which are 0. Initially, if all the elements are 0, my answer initially will be 0, right? Because later on I would be converting all the zeros into some other element, some other arbitrary positive element. So if I take my map here, so nothing, I have empty map initially. So I iterate over this thing, like I take this queries n times. The query takes two values, x and y. X is with the index and y is the value. So I have nothing to do with my x right here because it doesn't matter. I'm just only dealing in frequency. So I will increase my answer with map of y. Why? This is my current frequency f. Like I explained to you that uh, I have to subtract. I have to subtract f1 the f into f into f minus 1 by 2, and I have to add f plus 1 into f by 2 in my final answer. Why? Because I'm considering that the current frequency of element y, let's say it was f, it would be like incrementing by f, and since I showed that this whole thing comes out to be as good as it simplifies to like it comes out to be like implementing just f in your final answer. So it is as good as just
increment f in your final answer. So that is I'm doing here, like map of y gives me the current frequency of y, and I have to increment the frequency of current element by 1 and decrease the count of 0 by 1, right? Because I would be converting one of the zeros, mm, the zero which is at xth index, to this element y. And then I'm taking this max as my maximum frequency so far. So max is like my maximum frequency so far. So it could happen that it can be a case that map of y, that is like the updated frequency of y, can exceed the current value of max. So that is why I'm updating the max here. And what I have to like finally do, this answer is my current answer. I will be like subtracting this max C2 and adding max plus count, the maximum frequency plus the count of zeros, the remaining zeros, C2. Okay, in my final answer. So that will be my current answer for the current query. So this is going to be my answer for the current query. Right? So is the implementation part clear to you? Like the implementation is quite simple. Like this implementation is quite simple, right? Did you get this? Yes or no? Yes. Sir. Okay. And results in an AC idle. Yes. So this is going to be our last question. So is this the question that you were talking about, that you were stuck in this, right? The placing game? Yes, sir. Okay. So the question says that you are given two strings A and B of length n, and the strings contain only of lowercase English letters, and you are also given an integer k, and you have to choose a contiguous substring of A of exactly size k of character C. Okay, and then replace all these characters with a with of all these characters in the substring with C. Okay. Okay. This, and this is like the explanation part of this. Check whether it is possible to make A equal to B through a series of such transformations. If it is possible, also output a list of transformations of size at most 2 into n. Okay. So the operation claims that it is like maximum if A is convertible into B. So it can be done into at max 2 into n transformations. Else it won't be able to. It won't be a case that it can be convertible, right? So let's like come to the like first thing comes to our mind is that of course if A is not A is equals to B, we don't need to do anything, right? We can just simply print zero, because zero would be the steps or the number of operations required to convert A into B, because A is already equals to B, right? Yes, sir. This case is clear. So now, yes. So now we are given A and B. We're given A and B. So I say that if A equals to B initially, my answer would be simply straightforward zero, right? So let's try to find that when when will be my answer going to be -1? That is not impossible. That it is impossible to convert A into B, right? This would be a case when, let's say, if it is possible to convert A into B, then of course it would be done with a series of transformations, and the last transformation that occurred on A would leave. Let's say that it was applied on some index X with character C. So, and after this transformation, let's say this was my last transformation at index X, I choose a substring of size K and replace all the characters with a character C.
So at this last transformation, if I say that it is going to convert my string A into string B, okay? So this means that my final string B would be having at least one substring of size K with character C. Is this thing clear? मतलब what I'm trying to say is कि मान लेते हैं कि जो सीरीज ऑफ ऑपरेशंस हमने किए, ठीक है, उसमें आखिरी जो हमने ऑपरेशन किया वो इंडेक्स एक्स पर किया और इंडेक्स एक्स से लेके हमने के एलिमेंट सेलेक्ट करे और उन सबको सी में कन्वर्ट कर दिया, कैरेक्टर सी में, ओके। और मैं ये कहता हूँ कि ये आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन था और इसके बाद मेरा ए और बी बराबर हो गए। तो अगर ऐसा था तो जो मेरा फाइनल स्ट्रिंग बी बना उसमें कहीं ना कहीं ऐसा तो रहा होगा कि एग्जैक्टली के टाइम्स कंटिन्यूअसली सी आ रहे होंगे। यस सर। ये चीज समझ आ रही है? हाँ सर, क्योंकि कंटिन्यूअसली मेरा सी आएंगे। हाँ, क्योंकि ऐसा तो होगा ना कि जब तुम कभी ना कभी खत्म करोगे तो कम से कम के कैरेक्टर्स तो ऐसे बचेंगे ही बचेंगे जो कि सेम रहे होंगे बी में, है ना? जी सर। तो अगर मेरी जो फाइनल स्ट्रिंग जो बी गिवन है, अगर उसमें कोई भी कैरेक्टर कंटिन्यूअसली, मतलब ऐसी कोई सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती साइज के की, है ना, जिसमें एक एक कैरेक्टर के टाइम्स आ रहा हो, तो दैट मीन्स ए इज नॉट possible to be converted into B simply by performing any number of operations, any number of transformations. इसका मतलब यही तो हुआ। Are you getting this? चीज समझ आ रही है? हाँ सर, यहाँ पे थोड़ा मैं वो नहीं समझ पाया कि एक बार रिपीट कर दीजिए, कैसे इम्पॉसिबल कैसे हो गया वो वाला केस? वो इम्पॉसिबल ऐसे हुआ भाई कि तुम ये देखो ना कि तुम्हारे पास ए था, ठीक है, तुमने उसमें सच एंड सच सम के ऑपरेशंस किए हैं मान लो, ठीक है, और फिर तुमने उसको बी में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर ये पॉसिबल होती ये चीज, ए बी में कन्वर्टेबल होता, तो जो तुम्हारा आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन रहा होता वो क्या करता, वो कम से कम बी को ऐसा बना के जाता कि कम से कम उसमें के एलिमेंट्स कम से कम ऐसे होते जो कि एक ही कैरेक्टर के बराबर होते। सपोज दैट कैरेक्टर इज सी एच, क्योंकि हमारा ऑपरेशन क्या है, हमारा ऑपरेशन ये है कि तुम कोई भी इंडेक्स पकड़ो और उस इंडेक्स से लेके आगे तक के एलिमेंट्स को, इंक्लूडिंग दैट इंडेक्स, तुम के एलिमेंट्स को एक ही कैरेक्टर में कन्वर्ट कर दोगे। तो जो आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन रहा होगा मेरा ए पे, वो फाइनल स्ट्रिंग बी को ऐसा बना के जाएगा कि कम से कम के कैरेक्टर्स तो ऐसे होंगे जो कि सेम होंगे, एंड दैट दोस के कैरेक्टर्स वुड बी कंटिन्यूअस। तो इसका मतलब एक ऐसी सबस्ट्रिंग जरूर एग्जिस्ट करेगी बी में जो कि सेम कैरेक्टर्स को कंटेन कर रही होगी, एंड दैट वुड बी ऑफ साइज एग्जैक्टली के। ये चीज समझ आ रही है? यस सर, एक एग्जांपल से थोड़ा और समझना पड़ेगा। हाँ, ओके एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक टेस्ट केस है हमारे पास, ये आखिरी वाला ए बी सी डी एंड पी पी क्यू क्यू, ठीक है, ए बी सी डी एंड पी पी क्यू क्यू, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये ए बी सी डी पर हमने एक ऑपरेशन किया, हमने लाइक इंडेक्स फर्स्ट पे एक ऑपरेशन किया और इंडेक्स वन को चूज करके मैंने वन कॉमा पी परफॉर्म किया, मतलब कि मैंने इंडेक्स वन पे खड़े होके दो साइज की सबस्ट्रिंग चूज करी और उसको उस पूरी सबस्ट्रिंग को पी से रिप्लेस कर दिया, मतलब कि ये पीपीसीडी बन जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने इंडेक्स थ्री चूज किया और उसको क्यू से रिप्लेस कर दिया, तो दैट विल बी रिजल्टिंग इन माय फाइनल आंसर पी पी क्यू क्यू। ऐसे करके मैं बी तक पहुंच गया, ठीक है, बी तक पहुंच गया। तो इट यस इन्वॉल्व सर। लाइक टू स्टेप्स, मतलब पहला स्टेप और दूसरा स्टेप। तो मैं ये कह रहा हूँ आफ्टर एनी नंबर ऑफ स्टेप्स, अगर ऐसा पॉसिबल है कि तुम स्ट्रिंग ए से स्ट्रिंग बी तक जा रहे हो, तो जो मेरा आखिरी स्टेप रहा होगा, लाइक हियर इट इज द सेकंड स्टेप, जो मेरा आखिरी स्टेप रहा होगा, तो आखिरी स्टेप पे मैंने क्या किया, मैंने चूज किया इंडेक्स टू एंड
इंडेक्स 2 से लेके 2 साइज की सब स्ट्रिंग को पूरे को क्यू से रिप्लेस कर दिया, है ना? तो Yes, sir. मतलब कि माय के वाज़ 2 हियर, ठीक है? तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मेरी फाइनल स्ट्रिंग बी रही होगी, तो अगर ये कन्वर्टेबल है ए से बी में, तो मतलब ऐसा तो ज़रूर होना चाहिए कि कम से कम एक सब स्ट्रिंग ऐसी हो जो कि 2 साइज़ की हो, ठीक है? एक सब स्ट्रिंग ऐसी हो जो कि 2 साइज़ की हो और उसमें सारे कैरेक्टर सेम हो। क्योंकि जो आखिरी आखिरी जो ऑपरेशन रहा होगा, वो एक इंडेक्स से लेके कहीं के एलिमेंट्स तक सब कैरेक्टर्स को सेम बना के जाएगा, राइट? Yes, sir. Yes, अब sir. ये चीज़ समझ आ रही है? जी सर, अब आ गई समझ। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो आखिरी अगर ऐसा अगर अगर मान लेते हैं कि अगर मैं ये कहता हूँ कि जो मेरी गिवन स्ट्रिंग पी थी, ठीक है? अगर वो ऐसी दिखती, मान लो कि उसमें जैसे यहाँ पे के की वैल्यू 2 है ना, तो अगर मान लेते हैं कि अगर ये पी होता, पी जगह, एक मिनट, मान लेते हैं कि अगर ये पी क्यू होता, ठीक है? पी क्यू होता, तो मैं ये कह रहा हूँ इस केस में आंसर इम्पॉसिबल होता। क्यों? क्योंकि k इक्वल टू 2 है मेरा, ठीक है? और 2 साइज़ की ऐसी कोई सबस्ट्रिंग नहीं है, जहाँ पे सारे कैरेक्टर सेम हों, जी है सर। कि नहीं? यस। अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स हैं। तो अगर एनी नंबर ऑफ, या तो ऐसा हो कि पहले से दोनों बराबर हों, एक केस तो ये हो सकता है, a और b दोनों बराबर हैं, तो हमको कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं और उस ऑपरेशन से a b के बराबर बन रहा है, आखिरी ऑपरेशन के बाद ऐसा तो ज़रूर होना चाहिए कि k कैरेक्टर सेम बच जाएँ, है कि नहीं? कम से कम k कैरेक्टर्स तो सेम बचेंगे। यस सर, एक एग्जांपल है ABCABD वाला, उसमें k की वैल्यू हुँ, 2 है, तो सर हाँ, उसमें भी नहीं हो पाएगा ये, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। ये एलिमेंट्स सेम होने बट चाहिए इनके। ए, बी, सी और ए, बी, डी है ना? और k जी की सर। वैल्यू 2 है, ठीक है? तो स्ट्रिंग इनिशियली तो इक्वल है नहीं, यस सर। स्ट्रिंग इनिशियली तो इक्वल है नहीं, है ना? और क्या कहते हैं, हमको स्ट्रिंग क्योंकि इनिशियली इक्वल है नहीं और हमारे पास कोई भी 2 साइज़ की ऐसी सबस्ट्रिंग नहीं है, जहाँ पे कैरेक्टर सेम हो, है ना? तो हम कोई यस सर। ऑपरेशन करके, कितने भी ऑपरेशंस करके या कोई भी सीक्वेंस में करके हम a को b के इक्वल नहीं बना सकते हैं। तो इस केस में आंसर इम्पॉसिबल होगा, दैट इज़ वी विल प्रिंट -1 हियर। ये चीज़ समझ आती है? यस सर। यस सर। ठीक है। तो अब हमको ये तो समझ में आ गया कि हमारा आंसर कब एग्ज़िस्ट कर रहा है और कब नहीं एग्ज़िस्ट कर रहा है। अब हमारा बस गेम में इतना सा रह गया कि हमको बस ये देखना है कि आंसर क्या-क्या परफ़ॉर्म करके हमको मिल जाएगा। और ऐसा क्यों दिया है क्वेश्चन में कि वो एट मैक्स 2 एन ऑपरेशंस में ही हो जाएगा? हुँ? वो इसलिए दिया है, वो काफ़ी ईज़ी है वो चीज़ सोचना। वो इसलिए दिया है क्योंकि मान लेते हैं कि हमारे पास एक स्ट्रिंग थी, ठीक है? मान लेते हैं ये स्ट्रिंग थी और इस स्ट्रिंग में जो ये वाला पार्ट, मान लेते हैं कि कोई पार्ट इस स्ट्रिंग में, सपोज़ ये वाला पार्ट जो था, जस्ट अ सेकंड, सम टेक्निकल ग्लिचेस देयर, सेकंड। तो आई वाज़ सेइंग दैट मान लेते हैं कि ये हमको एक स्ट्रिंग गिवन थी और मान लेते हैं उसमें ये वाला पार्ट जो है, ये मेरी फाइनल स्ट्रिंग थी, ठीक है? बी, मतलब मान लो ये मेरी इनिशियल स्ट्रिंग ए है, सॉरी, ठीक है? और ऐसा होता है कि ये वाला जो पार्ट है, मतलब एक पार्ट उसमें ऐसा है जो जो कि बेसिकली मेरी वो के साइज़ की सबस्ट्रिंग बना रहा होगा, है ना? जो कि मेरी स्ट्रिंग बी में सेम कैरेक्टर को कंटेन कर रही होंगी, लेट्स से कैरेक्टर सी, ठीक है? तो मान लेते हैं कि इस इंडेक्स से लेके, लेट्स से दैट दिस इंडेक्स इज़ i और लेट्स से दैट दिस इंडेक्स इज़ j। i से लेके j तक, एग्ज़ैक्टली i से लेके j तक k कैरेक्टर्स होंगे जो कि सेम रहे होंगे, ठीक है?
तो मैं उस केस की बात कर रहा हूँ जब आंसर पॉसिबल है। तो अगर आंसर पॉसिबल है तो फाइनल स्ट्रिंग बी में कोई ऐसी सबस्ट्रिंग जरूर एग्जिस्ट करेगी जो कि सेम कैरेक्टर्स को कंटेन करती होगी, है ना। अब मैं ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि तुम ये देखो, अगर मैं तुमको ये बोलूं कि ए और बी को देख के चलते हैं, है ना। Say that if I consider A and if I consider B, so this is A and this is my B, and if I say that कि A का कोई कैरेक्टर है, जैसे मान लो आगे से देख रहा हूँ स्ट्रिंग को, A का ये कैरेक्टर और ये कैरेक्टर बराबर नहीं है ना। तो मतलब कि मेरे को A पर एक ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा इस इस इंडेक्स पे जहाँ पे AI इज नॉट इक्वल टू BI एट दिस करंट इंडेक्स, राइट। ये काम तो करना ही पड़ेगा ताकि ए में वो कैरेक्टर बराबर हो जाए बी के। तो तुम ये देखो कि तुम ये काम कब तक कर पाओगे। ये काम तुम उस इंडेक्स आई तक कर पाओगे मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट सच दैट कि तुम एटलीस्ट एक के साइज की सबस्ट्रिंग सेलेक्ट कर पा रहे हो। दैट इज मतलब एक ऐसे इंडेक्स तक जिसके आगे के माइनस वन एलिमेंट्स और एग्जिस्ट करते हो ताकि तुम एक सबस्ट्रिंग पिक कर पाओ, है ना। उसी इंडेक्स तक कर पाओगे। और अगर तुम राइट टू लेफ्ट चल रहे होगे, मतलब अगर तुम पीछे से चल रहे होते ए से, तो तुम ये यही सेम काम उतने ही नंबर ऑफ टाइम कर पाते हैं, है ना। अगर तुमको एक कैरेक्टर को किसी और कैरेक्टर में कन्वर्ट करना है, तुम एग्जैक्टली इतने टाइम्स ही कर पाते हैं। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट माय क्लेम इज दैट माय क्लेम इज दैट मान लेते हैं कि ये मेरी करंट एरे ए है, ठीक है। और ये मेरी करंट एरे मतलब एरे मतलब सब स्ट्रिंग मान लो, ये मेरा स्ट्रिंग बी है। और मान लेते हैं कि बी में ये वाला वो इंडेक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बी में के साइज की सबस्ट्रिंग में सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है। जरूरी नहीं कि वो ए में हो, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो ए में भी होंगे, पर अभी दोनों को एक साथ देखने की कोशिश करते हैं। तो मतलब कि इस वाली सबस्ट्रिंग को छोड़कर जितने भी एलिमेंट्स बी में बचे, है ना, जितने भी एलिमेंट्स बी में बचे और जितने भी एलिमेंट्स ए में बचे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बस ये देखो, जो जितने भी एलिमेंट्स बी के लेफ्ट में है, जितने भी एलिमेंट्स बी के लेफ्ट में है, उन सबको एग्जैक्टली सेम बनाना पड़ेगा जितने भी एलिमेंट्स उस इंडेक्स के लेफ्ट में है ए में, टू कन्वर्ट ए इनटू बी। मतलब कि ये सारे एलिमेंट्स जो बी के लेफ्ट में है ना, यही सारे एलिमेंट्स मेरे को यहाँ पे जनरेट करने पड़ेंगे ए ए के लेफ्ट पोर्शन में, है ना। और जो एलिमेंट्स बी के राइट में है, यही वाले एलिमेंट्स मुझे ए के राइट में भी जनरेट करने पड़ेंगे। और अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ तो मुझे बस एट लास्ट क्या करना रहेगा, मुझे बस एट लास्ट ए में ये वाला इंडेक्स चूज करना है। और ये पूरी सब स्ट्रिंग के साइज की होगी और ये एक ऑपरेशन में एग्जैक्टली वो बन जाएगी जो बी में जो भी कैरेक्टर रिपीटिंग होगा। लेट्स से सी, ये चीज समझ पा रहे हो। यस सर। क्योंकि ये मेरा आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन होगा ना, क्योंकि आखिरी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ही ऐसा रहा होगा कि बी में के कैरेक्टर सेम रहे होंगे, है ना। फिर बराबर हो जाएगा एक। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर ऐसा पॉसिबल है कि तुम बी के लेफ्ट में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो ए में जनरेट कर पाओ, है ना। और बी के राइट में जो भी कैरेक्टर्स हैं, मतलब वो उस सबस्ट्रिंग के लेफ्ट में और सबस्ट्रिंग के राइट में जो भी कैरेक्टर्स हैं, वो ए और बी में एक बार कन्वर्ट कर लिया तुमने, फिर तो गेम बस इतना सा बचा कि तुमको एक ऑपरेशन करना है और एक ऑपरेशन में तुम पूरी की पूरी स्ट्रिंग ए को बी के बराबर बना दोगे, है कि नहीं। चीज समझ आती है। यस सर। यस सर। ओके, तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। आई एम ट्राइंग टू से मैं ये बोलता हूँ कि ये जो है ना दिस थिंग,
तो बेसिकली अगर मैं लेफ्ट पोर्शन की बात करूँ, तो मान लेते हैं अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, ठीक है? मान लेते हैं कि अगर हम एक सेकंड गाइस। हुँ, मान लेते हैं कि अगर हम लेफ्ट टू राइट चल रहे हैं, अगर मुझे तो मैं क्या करूँगा, मैं लेफ्ट से राइट सिर्फ़ उस इंडेक्स तक जाऊँगा, जिस इंडेक्स तक जिस इंडेक्स से स्टार्ट करके बी में सारे कैरेक्टर सेम होने वाले हैं। मतलब कि लेट्स से दिस इज़ माय ए। हुँ, लेट्स से दिस इज़ माय ए, ठीक है? मान लेते हैं कि आई नो दैट इंडेक्स, राइट? आई नो दिस इंडेक्स IND, आई नो दिस इंडेक्स IND, ठीक है? इस इंडेक्स के बाद स्ट्रिंग बी में के कैरेक्टर सेम है, ठीक है? मुझे बस ये करना है कि if my current index I, if AI is not equals to BI, AI is not equals to PI, मतलब कि मुझे ith इंडेक्स पर एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, है ना? व्हाट आई विल डू, ith इंडेक्स पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करूँगा, तो उससे होगा क्या कि AI और BI बराबर हो जाएँगे। सिमिलरली मैं नेक्स्ट इंडेक्स पे जाऊँगा, फिर चेक करूँगा AI क्या BI के बराबर है? अगर नहीं है, ऐसे कर के मैं इंडेक्स IND तक, मतलब I लेस देन IND तक, मतलब कि उस सबस्ट्रिंग के लेफ्ट पोर्शन में ये इंश्योर कर लूँगा कि सारे के सारे कैरेक्टर्स ए में और बी में बराबर हो चुके हैं। है कि नहीं? इतनी बात समझ आती है? Yes, sir. और सिमिलरली अब मुझे अगर पीछे से बराबर करना है, मान लेते हैं कि ये मेरे के साइज़ की सबस्ट्रिंग बराबर थी बी में। अब मैं राइट टू लेफ्ट चलूँगा, है ना? राइट टू लेफ्ट चलूँगा और जैसे मान लो ये आखिरी एलिमेंट से शुरू करते हैं। तो आखिरी एलिमेंट अगर ए में और बी में बराबर नहीं है, तो मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा किस पे? क्या मुझे आखिरी इंडेक्स पे ऑपरेशन करना अलाउड है? नहीं सर। आखिरी इंडेक्स पे तुम नहीं ऑपरेशन कर सकते, लेकिन अगर मुझे आखिरी इंडेक्स ऑफ ए और आखिरी इंडेक्स ऑफ बी पे कैरेक्टर्स को सेम बनाना है, तो मुझे ऑपरेशन किस पे करना पड़ेगा? लेट्स से आई इज़ सर ये माय सब हाँ, तो मुझे मतलब वो जो कैरेक्टर है, मुझे इस तरीके के इंडेक्स को पकड़ना पड़ेगा सच दैट जो मैं जिस जिस कैरेक्टर को इक्वल बनाना चाह रहा हूँ, वो मेरा आखिरी कैरेक्टर हो, है ना? जी सर। हाँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आई से के पीछे जाना पड़ेगा +1, तो दिस वुड बी माय इंडेक्स आई माइनस के प्लस वन। आई माइनस के प्लस वन पे अगर मैं खड़े होके वो ऑपरेशन करता हूँ, तो माय करेंट इंडेक्स आई वुड बी द लास्ट इंडेक्स ऑफ दैट सबस्ट्रिंग, जो कि चेंज हो रहा होगा। इससे हो ये रहा है कि एक बार मान लो तुम राइट टू लेफ्ट चल रहे हो, ठीक है? मान लो एक बार तुमने एक कैरेक्टर को बदल दिया, ठीक है? मतलब तुमने ए और बी में वो कैरेक्टर सेम कर दिया है राइट टू लेफ्ट चलने पे, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जब तुम राइट टू लेफ्ट जा रहे हो, कभी भी तुम जिस कैरेक्टर को चेंज कर रहे हो, उसके पीछे वाले कैरेक्टर्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। समझ रहे हो? जो तुम ऑलरेडी इक्वल बना के आ रहे हो, कभी भी वो नहीं बदलेंगे, है ना? यस सर। यस सर। हाँ, इससे होगा ये कि तुम ये एट मैक्स कब तक कर सकते हो? ये तुम तब तक कर सकते हो जब तक ये वाली जो तुम्हारी वैल्यू है ना, ये वाली जो तुम्हारी वैल्यू है, ये ऑब्वियसली मतलब तुमको ये इंश्योर करना है कि ये जो मेरा राइट राइट वाला जो बाउंड है इस सबस्ट्रिंग का, यहाँ तक के कैरेक्टर्स ए और बी में बराबर हो जाएँ। इससे मैंने क्या किया, लेफ्ट टू राइट चल के मैंने लेफ्ट वाले कैरेक्टर्स बराबर कर लिए ए में, और राइट टू लेफ्ट चलकर मैंने राइट वाले कैरेक्टर्स बराबर कर लिए बी में, है ना? अब लास्ट में मुझे बस एक ही ऑपरेशन करना रह जाता है,
कि एक ऑपरेशन में अब मैं ए और बी को बराबर बना सकता हूँ। एंड दैट ऑपरेशन वुड बी कि मैं इंडेक्स आईएनडी को चूज करूं और जो भी कैरेक्टर है उसको चूज करूं। इंडेक्स कॉमा सी से मैं एग्जैक्टली एक ऑपरेशन में ए और बी को बराबर बना दूंगा। तो क्या तुमको ये चीज समझ आती है कि हमने ए और बी को बराबर कैसे बनाया? यस सर। और ये एटमैक्स टू एन ऑपरेशन क्यों था? ये एटमैक्स टू एन ऑपरेशन इसलिए था क्योंकि तुम लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो एटमैक तुम एन एन ऑपरेशंस कर पाओगे अगर बहुत से बहुत कर पाओगे तो, और राइट से लेफ्ट जा रहे हो तो भी एटमैक से एन ऑपरेशन कर पाओगे। तो इसका मतलब कि मोटा मोटा टू एन ऑपरेशंस में तुम्हारा काम हो जाएगा। वैसे टू एन भी नहीं लगेगा, लेस देन एन ही ऑपरेशन लगते हैं, यस सर, क्योंकि है ना? ए भी तो है हाँ एग्जैक्टली हाइब्रिड। तो अप्रोच क्लियर है ना तुम लोग को? यस सर। Shall we move to the implementation part? इम्प्लीमेंटेशन में कुछ ज्यादा खास रह नहीं जाता। मुझे बस ये इंडेक्स निकालना है और फिर तो मुझे बस अपनी सीरीज ऑफ ऑपरेशंस प्रिंट करने हैं कि पहले लेफ्ट टू राइट, फिर राइट टू लेफ्ट, और फिर ये वाला एक ऑपरेशन आखिरी वाला जो कि इंडेक्स कॉमा दैट कैरेक्टर होगा, है ना? ऑब्वियसली ये काम वन बेस्ड इंडेक्सिंग में अभी मैंने समझाया है, तो ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग में कोड करना भी पड़ेगा। तो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो आई हैव टेकन दीज वैल्यूज एन एंड के हेयर, ठीक है, और ए और बी मैंने इनपुट ले लिया, ठीक है, ए और बी इनपुट ले लिया। इफ ए एंड बी आर सेम तो आंसर मेरा 0 हो गया, सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड, है ना? और वरना फिर मैं क्या करता हूँ कि ये मेरा जो एम है, इस एम इज माई इंड, ओके, मतलब वो जो इंडेक्स है, ठीक है, एम में मैं वो इंडेक्स स्टोर करूंगा जो कि मेरा हाँ, जो कि मेरा लेफ्ट से राइट जाने में वो पहला इंडेक्स होगा जहां से अ, वो सब स्ट्रिंग बराबर होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। मतलब बी में आई विल बी हैविंग दैट सब स्ट्रिंग। सो व्हाट आई विल डू कि मैं आई इक्वल्स टू 1 से लेके आई लेस देन एन तक इटरेट कर रहा हूँ, और मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि मेरा बी आई क्या बी आई -1 के बराबर है। अगर है तो मैं सी को प्लस प्लस कर लूंगा, मतलब सी इनिशियली 1 है, मतलब सी इज द साइज ऑफ द सबस्ट्रिंग, ठीक है, क्योंकि एक एलिमेंट का तो सबस्ट्रिंग हमेशा रहेगा ही। आई विल डू अ सी प्लस प्लस एल्स, मैं अगर वो बराबर नहीं है इसका मतलब मैं अपनी सी को रीस्टोर कर दूंगा 1 पे, ठीक है। और अगर मुझे कभी ऐसा मिल जाता है कि सी इज इक्वल टू के, मतलब कि के साइज की सबस्ट्रिंग मुझे मिल गई है किसमें, बी में, ठीक है, के साइज सबस्ट्रिंग इज फाउंड इन बी, के साइज सबस्ट्रिंग इज फाउंड इन बी। तो मैं क्या करूंगा, अपने एम को, मतलब जो मेरा आई एन डी था उसको मैं आई माइनस के प्लस 1 कर दूंगा, ठीक है, मतलब मैं के इंडेक्स पीछे चला जाऊंगा पेरेंट इंडेक्स से, और मैं मैक्स वुड बी आई प्लस 1। व्हाट इज मैक्स? दिस मैक्स इज द राइट बाउंड। Max is the right bound of the substring and index is the left bound, मतलब m here, m is the left bound, ठीक है। तो मतलब कि m से लेके mx तक वो मेरी सबस्ट्रिंग एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और ठीक है, अगर मेरा m-1 रह गया, मतलब कि मेरे पास कोई ऐसा इंडेक्स आया ही नहीं, मतलब कि इट इज इम्पॉसिबल टू कन्वर्ट a इंटू बी, राइट, तो मैं -1 प्रिंट कर दूंगा सिंपली। एल्स अगर वो पॉसिबल है तो टू जनरेट द नंबर ऑफ ऑपरेशंस, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे एग्जैक्टली ये जो चीज है ना, m प्लस n -1 माइनस एम एक्स प्लस 1 प्लस 1, व्हाट इज दिस? दिस इज माई नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो ये देखो कि m तक तुम आए तो तुमने लेफ्ट से राइट m ऑपरेशंस की, ठीक है, और इतने ऑपरेशंस लाइक n-1 से तुम लेके n-1 से शुरू करोगे लास्ट इंडेक्स से, और तुम एम एक्स प्लस 1 तक एट मैक्स जाओगे। तो इतने ऑपरेशंस तुम पीछे से लेफ्ट राइट टू लेफ्ट परफॉर्म करोगे, और m ऑपरेशंस तुम लेफ्ट टू राइट परफॉर्म करोगे। तो दिस वुड बी माय टोटल ऑपरेशंस, है ना? एंड दिस प्लस 1, व्हाई दिस प्लस 1? दिस प्लस 1 इज क्योंकि आखिरी ऑपरेशन जो तुम करोगे वो इंडेक्स m पर करोगे तुम, है ना? तो दिस इज गोइंग टू बी कंट्रीब्यूटिंग टू माय फाइनल काउंट ऑफ आंसर, ठीक है। दिस वुड बी माय टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशंस, ठीक है। अब सीरीज ऑफ ऑपरेशंस क्या है? पहले तुम लेफ्ट टू राइट चलो, पहले एल टू आर, तो हम 0 से लेके लेस देन n तक गए, ठीक है, और हमने सिंपली क्या किया, हमने इंडेक्स प्रिंट किया वन बेस्ड इंडेक्सिंग में i+1, एंड हमने b ऑफ i प्रिंट किया। b ऑफ i क्यों? क्योंकि इफ ai इज नॉट इक्वल टू bi, ai
दिया है, तुमको क्या करना पड़ेगा? तो तुमको कौन सा कैरेक्टर सेलेक्ट करना पड़ेगा, AI या BI? यू नीड टू सेलेक्ट BI, राइट? अगर तुमको AI को BI के बराबर बनाना है तो यू नीड टू सेलेक्ट BI, ठीक है? तो हम यहाँ पे BI सेलेक्ट कर लेंगे। सिमिलरली दिस इज मूविंग फ्रॉम R टू L, मतलब राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट मूव करोगे तो n-1 से शुरू करेंगे, मतलब आखिरी इंडेक्स से, और हम दिस मैक्स -1 तक जाएंगे, ठीक है? I greater than max -1. So we will move from right to left. And what is this I plus 2 minus k? So it's the same thing जो मैं तुमको समझा रहा था ना, कि अगर तुमको आखिरी के कैरेक्टर में, like if you are on the ith character and if you want to change the ith character, then you need to perform your operation on I minus k plus 1. I minus k plus 1th इंडेक्स पे तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा ऑपरेशन। अब क्योंकि ये वन बेस्ड इंडेक्सिंग है, इट इज एज गुड एज I minus k plus 1, दैट इज I minus k plus 2. I minus k plus 2 वन बेस्ड इंडेक्सिंग में ये वो इंडेक्स होगा जहाँ पे तुमको परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है, ऑपरेशन। एंड BI वुड बी योर कैरेक्टर। एंड एट लास्ट ये आखिरी ऑपरेशन तुम्हारा क्या होगा, कि जो तुम्हारा M था, जो तुम्हारा इंडेक्स था लेफ्ट बाउंड, तुम उस पे परफॉर्म कर दोगे वो ऑपरेशन जो कि B of M एग्जिस्ट करता है। P of M में ऑब्वियसली दैट कैरेक्टर है जो कि k टाइम्स सेम एग्जिस्ट कर रहा होगा B स्ट्रिंग में, ठीक है? Is the implementation part clear? Yes, sir. ठीक है, so any more doubts like regarding anything? सर यहाँ तक ही किया था। Okay, ठीक है, no issues then. Okay, then we'll end our discussion here. So thank you everyone. Thank you, sir.